In this video, we are starting our first module of analysis of algorithm, that is introduction to AOA. Okay, so I have explained the syllabus in the previous video. So just check that so that you will be more comfortable with all the topics. Okay, so let's start. So what is an algorithm? An algorithm is a finite sequence of well-defined, unambiguous, and ordered instructions designed to solve a specific problem or perform a particular task, and it always produces the desired output in a finite amount of time. Okay, it basically means that if you have a particular problem and you have to write a code for it, or you have to find a solution of it, first you have to write the algorithm so that you can proceed. Like if you want to add two numbers a and b, what will be the step one? Step one will be start. Step two will be uh, take the value of a and b. Step three is calculate the sum, that is a plus b, and store it in some variable c, and fourth one is display c, and fifth one will be stop. Okay, so these are the steps to solve the problem. And what is the problem to solve? To calculate the addition of these two numbers. Okay, now let's see how we write an algorithm. Let- Okay, so basically there are two ways to write a particular algorithm. Okay, so we are taking the example of adding two numbers. You will have a lot more or complex problems in future, but just for the start, just start with the addition of two numbers. Okay, so what will be the first step? Start. Okay, just write it in the simple English, nothing else. This is the first way. Okay, then read two numbers. Read two numbers means take the value of a and b from the user. Suppose users put 7 as the value of a and 2 as the value of b. Now calculate the sum. Calculate a plus b. What it is? A 7 plus 2, that is 9, and 9 will be your value of some variable. Okay, then display sum, that is give the output, and then stop. That's it. These five are the steps of algorithm, and this is the first way by which you write the algorithm. Okay, nothing more than this. Then second way is to write pseudocode. Now what is pseudocode? Pseudo means false, and code आपको तो पता ही होगा. So why it is called a pseudocode? Because look here. Uh, this is not a perfect code like syntax wise, but it is somewhat looking like a code. Okay, so this is how we write the algorithm in secondary. Begin is the same as start. Okay, then input a and b. User say input लो a and b का, then calculate. Now this arrow means that whatever will be the answer of a plus b will be stored in the sum. Okay, and then output the sum, that is give the result on the screen, and then end. That's it. This is the pseudocode way of writing an algorithm. So you can write in any way. Like if you can also write a pseudocode, and you can also write the algorithm method like step 1, step 2, like this. In your exam both are okay, you'll get marks. Then let's see what is time and space complexity. So time and space complexity. So suppose you have a problem to solve, okay, and you have different ways in which you can write your algorithm. Okay, this is first way, this is second way, this is third way. Okay, now an algorithm has a space complexity and a time complexity. Okay, so basically time complexity is that how much time this algorithm requires to complete a particular task, and space complexity is that how much space in the memory this algorithm will take to complete a particular problem or to find the final answer. Okay, now see here.
if you have a particular problem and there are three ways in which you can write your algorithm. So one problem and three algorithms are there. Okay. Now let's see why do we calculate time and space complexity. So first algorithm will have some time complexity and second algorithm, sorry, and it will also have some space complexity. Like second algorithm will also have a time and space complexity. Third algorithm will also have some time and space complexity. Okay. Now, when you compare these three, you will get an algorithm which has the minimum time and space complexity. Okay. So the algorithm which has the minimum time and space complexity, you will choose that to write your algorithm with. Okay. और हम ये ऐसे क्यों करते हैं, लाइक आपको जब एग्जीक्यूट करना होगा अ पर्टिकुलर अल्गोरिदम, देन आपको मिनिमम टाइम में वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बिकॉज वो एफिशिएंट होगा. ओके. एंड मिनिमम स्पेस व्हाई? बिकॉज इफ योर अल्गोरिदम इज टेकिंग मिनिमम स्पेस एंड इन योर मेमोरी, इट विल बी मोर एफिशिएंट. सो आपका अल्गोरिदम टू just to make your algorithm more efficient, you have to choose the algorithm which has the minimum space and time complexity. Okay. Now we will study how do we calculate it in future. So now let's just see what are all these complexities. These are all time complexities. Now look here, on x-axis there is input size. Okay. Now what is an input size? Algorithm, you have a particular algorithm. Okay. Okay. Set of instructions. Okay. Now these are all set of instructions, then you will put input in it and it will give some output, right? So the input is nothing but your n. Okay. Input size n, and this is time the CPU is requiring to complete the execution. Okay. On y-axis. Fine. Now let's see different time complexities. So this notation is big O and in bracket there is 1. Now you will see big O notation in detail, but for now just uh, understand that big O notation here. Everywhere is big O notation, right? So this is a mathematical notation which is used to represent the time complexity. Basically आपके algorithm में जैसे जैसे input आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे time, उसके एग्जीक्यूशन टाइम में कैसे डिफरेंसेस आते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए या फिर वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बिग ओ नोटेशन लगाते हैं. ओके. नाउ व्हाट इज बिग ओ ऑफ 1? इट मीन्स दैट इट इज कांस्टेंट. मतलब आप इनपुट साइज कितनी भी बड़ी दो, इट विल ऑलवेज गिव द आउटपुट इन अ सेम टाइम. ओके. सो whatever will be the input size, uh, the output time will be constant throughout. Okay. Now what is big O of log n? It means that it will now the meaning of log n complexity is that it will divide your algorithm in half, then this half into another half, एंड ऐसे करते करते जब तक वो एक सिंगल यूनिट नहीं बन जाता प्रॉब्लम का, तब तक वो कंटिन्यू करे. And then it will solve all sub problems like this. Here I will explain. Now big O of log n complexity, what it means. Okay. So आपका algorithm है एक और इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस समझो. ओके. नाउ इस algorithm को आप हाफ में कट करोगे एंड दिस हाफ इनटू अनदर हाफ, और ऐसे करते करते जब तक आपको सिंगल यूनिट ऑफ सब प्रॉब्लम नहीं मिल जाता तब तक, एंड देन यू विल सॉल्व दिस. ओके. नाउ आपको ये हर
algorithm, each time it will divide in half and solve. That is the meaning of this log and time complexities. Okay. Now, what is the meaning of big of and time complexity is that it is linear. Now what does mean by linear? आप जैसे जैसे input size बढ़ाते जाओगे, time to execute that problem will also increase linearly. Now आपने इससे पहले linear graph तो पढ़ा होगा, जैसे जैसे x वाली वैल्यू बढ़ाते जाओगे, y वाली वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ेगी. So that is nothing but your big O of n notation. Now there is log linear, that is big O of n log n notation. Now this is a time complexity n log n. Log n तो आपको मैंने बताया कि it divides your problem in half and then it solves it. Okay. Now multiply that log n with your n. Okay. Then you will get a time complexity of big O of n log n. ये जो ग्राफ है ये आपको नेचर बताता है कि कैसे डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वर्क करती है. ओके. नाउ हियर इट इज n स्क्वायर. n स्क्वायर मीन्स आप n स्क्वायर कहाँ पे यूज होता है? व्हेन यू यूज nested loop, like in first, like if you know about the for loop, for example, the very basic one. Okay. Now for loop, okay, if it has I equal to 1, then I less than or equal to let's say 10 and then I plus 2. Okay. So ये जो for loop है वो कितने टाइम रन करेगा? 1 से लेके 10 तक रन. Okay. Now this will इसमें n क्या है? n is your 10. Okay. Now जब for loop के अंदर और एक for loop आ, लेकिन nested for loop. ओके. इस समय हम ये वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो नेस्टेड फॉर लूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n स्क्वायर. मतलब लूप के अंदर लूप है, देन यू विल यूज n स्क्वायर. ओके. देन दिस इज एक्सपोनेंशियल. This is exponential 2 raised to n and this is, look, this is n factorial. So these all time complexities, just look at the nature of these time complexities. Okay. Now let's calculate time complexity for a particular problem. Now look, here there is a algorithm product int a square bracket int n. Now product equal to 1. Here there is a for loop. For I equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus. Now product equal to product into a of I and then for loop close किया है. Then return product मतलब product की value return की है and ये starting वाला loop end किया है. Okay. Now look. Now here this is the algorithm for finding the product of all the numbers in an array. Okay. So array में आपके पास suppose elements है या फिर numbers है. Array you know ना, data structure. So array is like this and array is basically collection of numbers. Now it has index and it has numbers in it. Okay. ये आपके रोल नंबर समझो एंड रोल नंबर किसके होते हैं? स्टूडेंट्स के. तो इधर नंबर्स. ओके. लाइक 2 है, 5 है. These are the actual values at the indices. Then 7, 8, let's say 3, then 10, let's say. Okay. Now this is the algorithm to find the multiplication of numbers. Okay. Now look, algorithm product int a square bracket. Now this is your
इनिशियलाइजेशन, इधर इनिशियलाइज किया है आपका एरे और उसका टाइप क्या है इंटीजर, ओके। और दूसरा एक इंटीजर इनिशियलाइज किया है एन करके। नाउ दिस एन इज योर काउंट, लाइक सपोज एरे में 5 नंबर है, देन n will be 5, this is your count, okay। नाउ ये लूप स्टार्ट किया है। नाउ प्रोडक्ट, इसमें ये जो प्रोडक्ट है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट सेव करेंगे हमारे नंबर्स का जो एरे में है, ओके। सो इसको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया है 1, क्योंकि अगर 0 होगा तो whatever will be there in the array, the product will always be 0, इसलिए हमने 1 इनिशियलाइज किया है। नाउ इधर हमने फॉर लूप यूज किया है, फॉर आई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये सिंटैक्स है फॉर का। आई की वैल्यू इनिशियलाइज की है 1 एंड इधर कंडीशन दी है आई इज लेस देन इक्वल टू n। तो ये जो फॉर लूप है इधर तक है, इतना फॉर लूप है। ये फॉर लूप कितनी बार रन करेगा, जब तक आई इज लेस देन और इक्वल टू n। नाउ n is what your count, that is number of elements in your array. Suppose it is 5, okay, and then I plus plus it initialize किया पहले, then condition check की या कि ये n से less than or equal to है या नहीं। अभी 5 है, 1, now I is 1 and n is 5, 1 is less than equal to 5, the condition is true, okay। now ये second condition ये होगा, ये इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन ट्रू आ गई, फिर नीचे जाएंगे इस लूप में, ओके। नीचे क्या है, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू ए ऑफ आई। ना प्रोडक्ट क्या था हमारा 1, सो 1 इनटू ए ऑफ आई। ए ऑफ आई मतलब हमारा आई क्या था 1, 1 मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर रहेगा वो नंबर, और ये जो प्रोडक्ट मतलब 1 है वो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में सेव हो जाएंगे। नाउ व्हेन यू प्रोडक्ट में आपका ये जो आ गया मल्टीप्लीकेशन, कौन सा, फर्स्ट वाला नंबर और ये 1 का, ओके। नाउ ये प्रोडक्ट में आ गया। नाउ इट विल गो हियर, देन इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ 1, तो 1 की वैल्यू तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, देन अगेन इट विल चेक द कंडीशन, देन अगेन इट विल डू। सो ये जब हम 5 बार कर लेंगे तो हमारी प्रोडक्ट में फाइनल वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इन योर एरे आ गई। देन हमने ये फॉर लूप क्लोज कर दिया एंड देन रिटर्न प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट रिटर्न करने मतलब क्या, जो आंसर आया है वो रिटर्न करना है हमें, ओके। एंड देन एंडिंग द फाइनल लूप। नाउ हियर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है। नाउ हम ये देखो, इधर स्टेप कॉस्ट है, कितना कॉस्ट लग रहा है ईच स्टेप में। सो ये जो इधर से चालू है, हमने ये जो असाइन किया है प्रोडक्ट वेरिएबल को 1 वैल्यू असाइन किया है, उसको कितना स्टेप काउंट लगा, स्टेप कॉस्ट लगा 1, ओके। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, मतलब उसका टाइम पीरियड टू एग्जीक्यूट इज योर 1 एंड टोटल काउंट क्या आया 1 आया। नाउ ये जो फॉर लूप है वो i इक्वल टू 1 से i इज लेस देन इक्वल टू n तक क्या कर रहा है, रन कर। तो इसमें 3 पार्ट है, i इक्वल टू 1, देन कंडीशन i इज लेस देन इक्वल टू n एंड देन योर i प्लस, ओके। नाउ ये 3 जो डिफरेंट है उसके डिफरेंट काउंट करेंगे हम। इनिशियलाइज करने के लिए 1 फ्रीक्वेंसी लगती है और टोटल काउंट 1 आ गया। देन हम ये वैल्यू इनिशियलाइज हम एक ही बार करते हैं, बट हम ये चेक कितनी बार करते हैं, जितने बार ये नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन योर एरे, राइट। सो फॉर i इज लेस देन इक्वल टू 8, ये कितनी बार रन करेगा, n प्लस 1, ओके। एंड व्हाई इज दैट, लेट्स सी। नाउ लिसन, when you check this condition and then you proceed for the loop inside, then for the last condition, like your size of array was 5, right, when it is incremented to 6, okay, आप जब ये चीज को इंक्रीमेंट करते हो, then here
you check the condition whether 6 is less than or equal to 5 or not. 6 is less than equal to 5 or not. ये बीच वाली कंडीशन चेक करते हैं. देन वो फॉल्स आ जाता है, और जब ये फॉल्स आ जाता है तब हम ये ग्रुप से बाहर आ जाते हैं. ओके, नाउ to make this condition false, you have to check this 6 value with the 5. Okay, so जब n तक हो गया आपका, so this 6 is your n plus 1. तो 6 कैलकुलेट करने के बाद ये फॉल्स हो गई, एंड देन यू कम आउट ऑफ द लूप. सो ये 6 वैल्यू हमेशा चेक करनी पड़ती है. दैट्स वाई ये जो i is less than or equal to n है, ये n टाइम्स रन नहीं करता. ये कितने बार रन करता है? n plus 1 टाइम्स रन करता है. ओके, एंड नाउ द लास्ट वन इज फॉर i plus plus. नाउ ये i plus plus कितनी बार रन करता है? n टाइम रन करता है. ओके, एंड ये टोटल कॉस्ट में कितना ऐड होगा? प्लस n. ओके, नाउ लुक, नाउ ये प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू a of i. इसका स्टेप कॉस्ट क्या है? 1. ओके, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? ni. ओके, वाई? अभी ये जो है वो फॉर लूप का पार्ट है ना, तो फॉर लूप का जो भी पार्ट होता है वो कितनी टाइम रन होता है? n टाइम रन. तो इधर आ गया n. तो ये प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू ए ऑफ i का आ गया फ्रीक्वेंसी n, और टोटल कॉस्ट में ये n ही देगा. देन ये तो लूप कंप्लीट किया तो इसका तो कुछ नहीं आएगा. देन रिटर्न प्रोडक्ट, ये वाला इंस्ट्रक्शन है, इसका स्टेप कॉस्ट आएगा 1. ओके, क्योंकि ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा. ओके, एंड देन इसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ गई और टोटल कॉस्ट में 1 ऐड होगा. नाउ लुक हियर, वी जस्ट हैव टू ऐड ऑल दिस. Now, for the final answer, you just have to add all the total cost, total count. Okay. Now, look, there are 1, 2, 3 n's. Okay. So 3n, and ones are 1, 2, 3, and 4. Okay. So 3n plus 4 is your total time complexity. So now, space requirement. सो हम स्पेस रिक्वायरमेंट कैसे चेक करते हैं? सो नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ 2 टाइप. लाइक हमारा फिक्स पार्ट मैम में एक समझो एक एल्गोरिथम. ओके, उसका उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के 2 पार्ट, एक फिक्स्ड पार्ट होता है और एक वेरिएबल पार्ट. जो मेमोरी में फिक्स पार्ट है, लाइक लिसन, फिक्स पार्ट इज योर मेमोरी टू स्टोर 3 वेरिएबल्स. अभी इस वाले एल्गोरिथम टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इन योर एरे, इस एल्गोरिथम में आपके पास फिक्स पार्ट क्या है? मेमोरी टू स्टोर 3 वेरिएबल्स. आपको ये जो 3 वेरिएबल्स है, लाइक प्रोडक्ट, देन योर n की वैल्यू एंड योर i की वैल्यू, ये आपके पास 3 वेरिएबल्स है जो आपके फिक्स पार्ट में आएगी. इस वेरिएबल को स्टोर करना आपको किस पार्ट में आएगा? फिक्स पार्ट में. और वेरिएबल पार्ट क्या आएगा आपका? मेमोरी टू स्टोर एन एरे t. तो ये जो आपका एरे, लाइक मेमोरी टू स्टोर एन एरे t ऑफ साइज n. नाउ यूजर कैन इनपुट एनी नंबर ऑफ एरे. लाइक यूजर तीन नंबर वाला एरे भी पुट कर सकता है, यूजर 5 नंबर वाला एरे भी पुट कर सकता है, और यूजर ऐसे भी एरे पुट कर सकता है जिसकी साइज लेट्स से 10 हो. ओके, सो वो वेरी करेगा, वो चेंज करेगा. सो उसका जो साइज है, उसका जो स्पेस रिक्वायर्ड है, वो कौन से पार्ट में आएगा? वेरिएबल. एंड फिक्स पार्ट में क्या क्या आएगा? प्रोडक्ट एन एंड योर आई. ओके, so now there are 3 variables, so this is 3, that is your space requirement for fixed part is 3, and the space required for variable part, that is memory to store an array. So array user देगा, उसका साइज क्या होगा? n साइज होगा, तो उसको स्पेस क्या लगेगा? n लगेगा. तो ये ऐड करने के बाद क्या आएगा? n plus 3.
दिस इज योर टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अभी ये मैंने आपको मैन्युअली करके दिखाया पूरा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। In our syllabus there we don't have to find like this for every algorithm. We have master method to find the time complexity of various algorithms. Okay, you don't have to count like this because this is a small algorithm. Okay, there are a lot of big algorithms also. You can't find time complexity for each instruction like this, like we are counting now. We can't find like this for every algorithm. So we have master theorem or master method for that. We will look that in further videos, not now. Okay. So now let's see what is growth of function. Okay. Now look, the running time of an algorithm is the function of an input size given to an algorithm. Okay. जैसे जैसे आपका इनपुट साइज बदलता जाएगा, आउटपुट साइज भी वेरी करता जाएगा। The growth of this function with the increasing input size increases the efficiency of an algorithm. अभी आपको ग्रोथ रेट ऑफ एनी फंक्शन फाइंड करना है। Look, the growth rate function is what the time and space complexities are defined as functions of the numbers of input instances of an algorithm. Now, suppose you have to find the growth function of any function. Let's take an example. Suppose you have algorithms, okay, with running time, let's say running time है उसका 100n square. Okay, 100n square is running time of the algorithm. Okay, now how much slower do each of this algorithm get when you double, like अगर एक algorithm का रन टाइम का फंक्शन है, रन टाइम का क्या है ये फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जिसमें वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आता है। ओके, सो रनिंग टाइम का भी क्या होता है, फंक्शन होता है। सपोज एक अल्गोरिदम का रनिंग टाइम का फंक्शन है 100n स्क्वायर। ओके, अगर उसका इनपुट साइज n है तो ये वाला उसका क्या है, रनिंग टाइम फंक्शन। ओके, नाउ इफ यू डबल द इनपुट साइज, 2n का डबल क्या होगा, 2n, राइट। अगर ये डबल करते हो आप तो इसके एग्जीक्यूशन टाइम में क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप इसका इनपुट साइज क्या करते हो, डबल करते हो। ओके, इसमें n के बजाय क्या डालना है, 2n। चलो 100 इंटू n की जगह इसका 2n, 2n and square as it is. Now this will become 100 into 4n square. This is 400 and square. Now 400 and square, it has become 100 and square ka 400 and square. Now it implies that the algorithm gets slower by a factor of 4. Okay, 100 and square का क्या बन गया, 400 and square. तो जब हम इनपुट साइज डबल करेंगे तो ये अल्गोरिदम स्लोअर बन जाएगा फैक्टर ऑफ 4 से। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट चेंज इन द ग्रोथ फंक्शन। ओके, अभी लेट्स सी सेम अल्गोरिदम है जिसका फंक्शन है रनिंग टाइम का 100 एन स्क्वायर। ओके, और आपने पहले तो n था तो इसका ये वाला टाइम रिक्वायरमेंट था, रनिंग टाइम फंक्शन। नाउ अगर आपने n में चेंजेस किए कि n की वैल्यू n से आपने n इक्वल टू n प्लस 1 कर दी, समझो नई वैल्यू क्या है, n प्लस 1। तो इधर सब पुट करो, 100 n की जगह n प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ 100 n प्लस 1 ये इवेल्युएट कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, फिर प्लस बी का स्क्वायर। नाउ दिस विल बी 100 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n
प्लस 1। ओके, ये आ गया फाइनल फॉर n प्लस 1। जब हम n में चेंजेस किए, n का क्या बना दिया हमने, n प्लस 1 बना दिया। ओके, तो हमारा ग्रोथ ऑफ फंक्शन कैसे बदला? It implies that the algorithm gets slower by an additive of this. Look, इसको फर्दर भी करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई 100 n स्क्वायर ब्रैकेट ओपन प्लस 210 प्लस 100। ओके, सो ये जो ओरिजिनल था 100 n इधर है। ओके, और एडिशनल क्या है हमारा, 200 n प्लस 100। सो हमारा नया जो एल्गोरिदम है जिसमें इनपुट साइज क्या है n प्लस 1, वो कितने से स्लो हो जाएगा, 200 n प्लस 100। ओके, दिस इज योर ग्रोथ ऑफ फंक्शन। नाउ इन फर्दर वीडियोस वी विल बी सीइंग ग्रोथ ऑफ फंक्शन, तो हमने अभी कर दिया। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशन देखेंगे जो बिग हो, ओमेगा एंड थीटा है वो वाला, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट देखेंगे, एंड मास्टर मेथड भी देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।